Welcome to SLD online class 7th standard general science. We were in the chapter 3rd, that is properties of natural resources. हम थर्ड चैप्टर पे थे, वो है properties of natural resources. Today in this video I am going to explain you the properties of soil. Soil is an important property. Color is an important properties of soil. The soil gets its color as a result of several processes. The color of the soil near land surface is darker than the color of the lower layers. Soil may be of different colors such as black, red, copper, yellow, grey. What? The color is the main important property of the color is the main important of the soil, and the soil, the color it gets from the several process. It has a many process, from that it gets a color. And the soil that is nearest to the surface is dark. The soil that is nearest to the land surface, to the land, it is dark in color, and than the color in the lower layer. The soil, the land nearest to the land, the soil is very dark, but to the lower it is not so dark. Soil has a different color like black soil, red soil, copper soil, yellow soil and grey soil. We have many different color soil. क्या सॉइल का प्रॉपर्टीज क्या है? मेन प्रॉपर्टीज से कलर, वो कलर से उसका बहुत मेन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है उसका, और वो बहुत सारे प्रोसेस से उसको कलर मिलते हैं. और जो सॉइल लैंड के पास में है, लैंड के सरफेस के ऊपर है, उसको क्या कहते हैं? वो डार्क कलर में रहता है. वही सॉइल को आप डग करोगे, नीचे के तरफ देखोगे तो उतना डार्क कलर में नहीं रहते हैं. और सॉइल क्या है? बहुत सारे कलर्स में है, जैसे ब्लैक, रेड, कॉपर, येलो, ग्रे, ऐसे बहुत सारे कलर्स में हम सॉइल देखते हैं. The colors of the soils are useful for its classification. Besides, they are indirectly useful in the indicating several properties of the land. In this way, the properties of the soil, such as the fertility, drainage of water, capacity to hold water, becomes clear from its color. The color of the soil depends upon its textile and its organic ingredients, as well as and chemical ingredients like iron, lime. Soil is very useful in the classification. The soil, to classify the soil into different, we see the color and we classify the soil, and it is directly useful for indicating several properties, and we can indicate the several properties of the land, and the property, the fertile, drainage of water, capacity to hold water, becomes clear from its color. By seeing the color of the soil, we can clearly come to know how it is fertile, how much it has the fertility, and drainage, how much it can drain the water, and how much it can hold the water. By seeing the color of the soil, we can come to know all this. And the color of the soil, it depends on the texture and the organic ingredient. The ingredient of the soil, organic ingredient, the soil depend on its, the color depends on the ingredients of the organic substance and the chemical ingredients like lime and iron. What happens here? The textile, the color, it depends on the organic substance. The organic substance like cow dung, they mix in the farmer mix in the soil, like that only. It can, and see, nowadays we can see at a home also they mix in a soil the waste vegetables. Okay, which vegetables are not useful, uncooked vegetables, okay, that which are not cooked, that it is, if we will keep in the, it is as used as a organic ingredients.
Nowadays they are using all this. In a village also they use all that things. The waste thing, leaving a plastic, they are using all that. They are mixing in the soil. From that only we can come to know the how the soil is texture. क्या होता है सॉइल का कलर कैसे हमें मालूम पड़ा, क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं सॉइल के लैंड के, डायरेक्टली वो कैसे उनका लैंड पे है, वो लैंड पे जो सॉइल है वो कितना फर्टाइल है और उसको ड्रेनेज ऑफ वाटर कितना, वो वाटर कैसे कैपेसिटी और उनके कलर को देख के हम लोग ये क्लासिफाई करते हैं कि वो कितना फर्टिलिटी है, कौन से क्रॉप ग्रो हो सकते हैं, कौन सा सॉइल ब्लैक सॉइल किस चीज के लिए है। ऐसे हम लोग उनके कलर देख के ही उनको हम लोग उनका फर्टिलिटी सब और उनका कैपेसिटी ऑफ वाटर सब हमें मालूम पड़ता है सीइंग। और सॉइल डिपेंड्स ऑन इट टेक्सचर पर वो डिपेंड होता है, उसका कलर जो है सॉइल का कलर जो टेक्सचर पर डिपेंड होता है। कैसे जैसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो रहते हैं सॉइल में डिसॉल्व, कौन से ऑर्गेनिक सब्सटेंस इसमें लगता है, वैसे जो डिसॉल्व होता है वैसे जैसे केमिकल इंग्रेडिएंट्स क्या है, जैसे आयरन हुआ और लाइम हुआ, ये क्या होता है, ये केमिकल सब्सटेंस है जो सॉइल में मिक्स किया जाता है कि सॉइल फर्टाइल रहे, खराब ना हो पाए। apparatus 3 measuring cylinder, 3 glass plume, filter paper, water, fine sand, coarse sand, soil from an earthen pot used for growing plant, etc. Procedure: flip cone of the filter paper in the 3 glass plume. Fill the cone with equal quantity of sand, sandy soil, clay respectively. Place the plume on the measuring cylinder. Pour 1 test tube of water in each of the plume and observe how much water is collected in each measuring cylinder. What inference will you draw from this? What are the material you are going to take? 3 cylinder, 3 glass plume, filter paper, water and fine sand, coarse sand, soil and the soil from that earthen pot. Okay, all we are going to take this. After taking that you are going to fit a cone to the filter paper in the 3 glass plume. In the picture you can see you are going to fill a filter paper. After that you are going to fill a equal quantity of, in a first cylinder you are going to place a sand, in second you are going to place a sandy soil, in a third you are going to place a clay. After placing that you are going to pour a water in that. After pouring a water you are going to see which soil has collected more water. See in A, it is a sand do not collect more water, so it do not suck more water, so water will be up. And in a B you can see here the sand is it is sandy soil. It does not it collect water but little. But in a clay you can see it holds the water in a high capacity. See, you can see it has sucked the water more. आप यहाँ पे देख सकते हो आपको क्या क्या यहाँ है, एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है, आपको लेना है सैंड, आपको क्या क्या लेना है, सिलेंडर लेना है, फिल्टर पेपर लेना है और ग्लास फ्लूम लेना है, वाटर फाइन सैंड लेना है, कोरेस सैंड लेना है और सॉइल अर्थन पॉट से लेना। उसके बाद वो सब लेने के बाद आपको क्या करना है, आप कोन में फिल्टर पेपर को फिट करोगे। फिट करने के बाद आप 3 ग्लास फ्लूम लोगे। उसके बाद क्या करोगे, आपको तीनों में जो सिलेंडर ग्लास लिए हो ना, तीनों में आपको एक में सैंड डालना है, एक में सैंडी सॉइल डालना है, एक में क्ले डालना है। वो भी जितना आप सैंड डालोगे उतना, अगर 2 टेबल स्पून ऑफ सैंड डाल रहे हो तो 2 टेबल स्पून ऑफ सैंडी सॉइल B टेस्ट ट्यूब में सिलेंडर में डालोगे। अगर
उतना जितना आप लिए हो उतना ही डालना है। अलग अलग सिलेंडर में डालना है। डालने के बाद आप वाटर डालोगे। वाटर डालने पर आपको देखना है कौन सा ज़्यादा पानी सक करता है। यहाँ पे ए में देखो क्या होता है, सैंड डाले हो, सैंड में आप पानी डालोगे, क्या वो पानी जल्दी नहीं सक करता, उसलिए पानी ऊपर है। ओके, और बी में आप पानी डालो, सैंडी सॉइल क्या करता है, सक करता है, लेकिन थोड़ा कम ही सक करता है, उतना ज़्यादा नहीं। उसके बाद सी में देखो, क्ले क्या करता है, वो बहुत सारा पानी होल्ड करता है। सॉइल टेक्सचर, सॉइल कंटेन पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज। The texture of the soil is determined by the proportion of the particles of the various size in it. Following are the types of the soil or the basis of the texture. Texture of soil. What is the texture of soil? It is the soil that contain a different particle in a different size. It is a texture of the soil. By seeing the texture of the soil, the soil has a type. It is divided into the many types like sandy soil, still soil and clay soil. First we are going to see a sandy soil. Soil texture क्या है, वो जो soil रहता है, soil में जो जो particles रहते हैं different size में, कोई वेरियस साइज में रहते हैं, उनको प्रॉपर्टीज देख के और सॉइल टेक्सचर, वो सब प्रॉपर्टीज देख के टाइप्स ऑफ सॉइल डिवाइड हुआ है। अभी सैंडी सॉइल, द प्रोपोर्शन ऑफ द सैंड्स that is large particles is high in a sandy soil. Water drain rapidly through sandy soil. It is easy to plumb this soil, but it is less fertile. This is because of the particles of the sandy soil are made up of minerals called silicon dioxide. These particles do not dissolve in water and therefore the soil has very little capacity to supply nutrition. What happens in a sandy soil? It is the particle that is present in a soil is very large and it is very large. Okay, and it rapidly sandy soil. Water drain rapidly. What happens? Water will not be there. It will drain off. It will run off. So thus we can easily plumb the soil, and it is very less fertile. And because why it is very less fertile? Because the particle that is present in the sandy soil is made of silicon dioxide, and so the water does not dissolve it. So, and because of that, the sandy soil, it has very less capacity to supply the water. It supplies a very less कैपेसिटी ऑफ न्यूट्रिशन। क्या होता है सैंडी सॉइल में, जो पार्टिकल प्रेजेंट रहता है इसमें बहुत लार्ज रहते हैं। लार्ज होने के कारण वहाँ पे वाटर जो होता है ड्रेन हो जाता है, वाटर रुकता नहीं है, इसलिए हम सॉइल को बहुत इजीली प्लम कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत लेस फर्टाइल रहता है, इसमें प्लांट जल्दी नहीं ग्रो होते हैं। ये लेस फर्टाइल रहता है, तो इसके लिए फार्मर ये सॉइल नहीं यूज़ करते हैं। क्योंकि ये क्यों लेस फर्टाइल है? क्योंकि जो पार्टिकल इसमें प्रेजेंट है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड से बना है और इसीलिए वाटर इसमें नहीं डिज़ोल्व होता है। इसके वजह से वाटर जो सॉइल जो है बहुत कैपेसिटी उसका बहुत लेस है और वो लेस न्यूट्रिशन सप्लाई करता है। Slit soil. The particles of the slit soil are of medium size. Slit soil is not pluggable as sandy soil. However, it is much more pluggable than clay soil. This soil contain a large proportion of organic material. Its capacity to supply nutrition is much greater. Slit soil is also called a sedimentary soil. What is a slit soil? It is the particles it presents in minimum size and it is not pluggable as a sandy soil, but it is pluggable than a clay soil. The proportion of this is organic material is the proportion is large. The organic material has the present is more in this soil and the capacity to supply nutrition is much greater. So this soil is also known as a sedimentary soil. You can see here slit soil.
Okay, slit soil क्या है? You can see the picture in how it looks, and the particles in this is present are in a minimum size, and it is not a pluggable as a sandy soil, but it is pluggable than clay soil. क्या होता है इसमें? जो इसमें स्लिट सॉइल क्या है? जो इसमें पार्टिकल प्रेजेंट हो मिनिमम साइज में है और ये प्लगेबल नहीं है. जैसे सैंडी सॉइल प्लगेबल है ना, वैसे वो नहीं है, लेकिन क्ले से प्लगेबल है. क्ले सॉइल है ना, उससे ज़्यादा प्लगेबल है. और इसमें जो ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट है वो बहुत लार्ज है. इसके वजह से न्यूट्रिशन सप्लाई करता है बहुत ज़्यादा. सो इसका नाम सेडिमेंटरी सॉइल करके भी इसको बोला गया है. क्ले सॉइल. In this soil, the proportion of small particles is maximum. The particles of clay soil feel smooth to touch. Clay soil has a high water holding capacity. What? Clay soil, the proportion is the particle is very small, and the particle we can if we touch the clay soil, it is very smooth and it is touchable. Okay, to touch we can feel it is very smooth, and the water holding capacity is more in the clay soil. Clay soil क्या है? इसमें जो particles है वो बहुत ही छोटे छोटे रहते हैं, और जब हम इसे टच करेंगे बहुत स्मूथ रहता है. तो इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है. अभी जैसे सैंडी सॉइल हम लोग छुएंगे तो क्या होता है? उसमें पत्थर रहेगा, और स्लिट सॉइल को उसमें थोड़ा पत्थर रहेगा, थोड़ा मड्डी रहेगा. लेकिन वहीं पे क्ले सॉइल हम लोग छुएंगे तो बहुत ही स्मूथ रहेगा. सॉइल स्ट्रक्चर. The structure of soil depends on the different shape of the particles in it. Soil occurs in the form of columnar, laminar, granular, as well as a block-shaped structure. What here you can see in the picture, the soil depends on the different shape of its particles, and it occurs in the form of columnar, laminar, granular, and well as block-shaped structure. See here, you can see here how it is occur in a column shape, and in the here you can see how it is occurring in a column shape. So we will call it as a columnar. Okay, then in a laminar shape, in a lamp shape, so we will call it as a laminar. So we will call it as a laminar, and then it is occurs in a granular shape, so we will call it as a granular. After that it occurs in a block shaped structure. See here, it occurs in a block shape, so we will call it as a block shaped structure. So soils occur in a different shape also. सॉइल क्या होता है? वो डिपेंड होता है डिफरेंट शेप पर. अपने पार्टिकल्स जैसा रहता है वैसे वो डिफरेंट शेप पे वो डिपेंड होता है. जैसे कॉलम शेप में रहेगा तो कॉलमनर कहेंगे, और वो लैम्प शेप में रहेगा तो लैमिनर कहेंगे, और ग्रानुलर मतलब वो ग्राउंड शेप में रहता है, इसलिए उसको हम लोग ग्रानुलर कहते हैं. और बाद में ब्लॉक शेप में रहता है ना, तो उसको ब्लॉक रहता है, ब्लॉक करके रखता है एक पत्थर को सैंड. सो इसलिए हमने वो ब्लॉक शेप स्ट्रक्चर बोलते हैं. Importance of soil structure. The fertility of soil depends upon soil structure. The advantage of good soil structure are as follow. Roots get a sufficient supply of oxygen. Water drainage is good. Therefore, the root of plants grow well. What happen? The water supply. What is the importance of soil? The fertility of soil, it depends on the structure of the soil, and the advantage of good soil is has the structure. The roots there will be it has a sufficient supply of water, oxygen. Okay, because plants wants oxygen to prepare their food. So if the soil is good, then it gets a good oxygen supply. If the soil is bad, it does not get a oxygen supply very good, so it die off. It does not grow so taller.
Then water drainage is good. Water drainage means the soil hold the water more, so the roots of the plants also grow well. What happened? The soil holds the water. Drainage means the soil holds that much water that is good for a plant. So if the water drainage of the soil is good, then the plants grow very well. क्या होता है इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर? क्या है वो? डिपेंड होता है फर्टिलिटी ऑफ सॉइल के ऊपर डिपेंड होता है. अगर फर्टिलिटी अच्छा है सॉइल का तो प्लांट्स उसमें अच्छा ग्रो होते हैं. जैसे अभी गुड रूट्स को जो सप्लाई ऑक्सीजन मिलता है, अगर फर्टिलिटी सॉइल का फर्टिलिटी अच्छा है तो रूट्स को अच्छा ऑक्सीजन मिलता है, वो ग्रो अच्छे से होता है. वो ऑक्सीजन क्यों वो लोग लेते हैं? क्योंकि उनको खुद का खाना बनाना रहता है तो ऑक्सीजन उन लोग लेते हैं. तो जब सॉइल अच्छा है तो रूट्स को अच्छा ऑक्सीजन मिलेगा. और वाटर ड्रेनेज गुड रहेगा. वाटर ड्रेनेज मतलब जो वाटर होल्ड करता है सॉइल वो अच्छा रहेगा. तो वाटर ड्रेन करता है और अच्छे से सप्लाई करता है. So here I stop my explanation. In my next video I am going to explain you the uses of the soil.